सीडेड वेराइटी। ये क्या है? राउंड ब्रीडेड प्लांट, round breeded pea plant, and here it is wrinkled seeded pea plant, round seed and wrinkled seed. These two seeds are kept in, पहला देखो, these two seeds are kept in soil, and after giving appropriate conditions, they will grow into seedlings or saplings. Second step, when this plant matured, he uses pollen taken from the anther of wrinkle-seeded variety to fertilize the plant grown from the round-seeded variety. So, here Mendel did emasculation and bagging technique. Emasculation means masculine part is removed. ठीक है? जिसमें हमको करना है, suppose here we remove in this flower, we remove male part. इसका क्या निकाल दिए? मेल पार्ट निकाल दिए. Male part removed. That is also known as emasculation. Masculine means male part. Emasculation, male part को remove कर दिए, means stamen को remove कर दिए, and stamen from desired variety. यहाँ desired कौन है? Wrinkled pea plant. So that from that plant we use pollen grains to fertilize round pea plant. Fertilization हो गया, cross fertilization, and when after fertilization it forms spore. यहाँ पे जो फल निकला वो कैसे थे? All round. लिया था हमने क्या? Round pea plant and wrinkled pea plant. एक का क्या निकाल दिए? उसका स्टेमेन हटा दिए, emasculation किए, और उससे desired variety of pollen grains को ला करके dust करना है, and after fertilization it will grow into seeds, and the seed which is produced by that cross breeding contains all round plants. So here you can see that in case of wrinkled pea plant and round pea plant, round variety or round is what? Round क्या है? Dominant trait है. ठीक है? These pea plants were allowed to self-fertilize. I told you in offline classes that for F2 generation, जब भी F2 generation, ये एकदम याद रखेंगे कि for obtaining F2 generation, we did selfing. Selfing among F1 generation. मेंडल भी यही कर रहे थे. एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फॉर प्रोड्यूसिंग F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेल्फिंग अमंग F1 जनरेशन. तो हियर इट इज रिटन कि व्हेन वी गॉट all tall, all round flower, all round seeds in F1 generation, then it is allowed to crossbreed. इसी तरह से crossbreed कराए, means दो जो F1 generation में plant आया उसी में emasculation and bagging and then fertilization. Then in F2 generation 75% plants were round
and 25% plant produced were wrinkled. मेंडल जब कर रहे थे तो उन्होंने देखा 3:1 का रेशियो। 3 कैसे थे? डोमिनेंट ट्रेट वाले, और 3 कैसे और 1 कैसे? रिसेसिव। ठीक है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो है, तुम लोग जानते हो, तुम लोग 10 में भी पढ़े हो। और genotypic ratio, as we know today we are doing gene, so genotypic ratio is 1:2:1। ये कैसा रेशियो हो गया? जीनोटाइप रेशियो। इसी दो चीज से अभी जो हम लोग पढ़े, इतना से हम लोग 2 लॉ निकाल लेते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट कर देना, अलग अलग हो जाना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ तक क्या शो कर रहा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस means all plants produced were round seeded, and here in F2 generation the traits get separated, traits अलग अलग हो गए। एक कैसे हुए? 3 कैसे हो गए? डोमिनेंट, और एक क्या भी मिल गया? रिसेसिव। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन कर रहा है ये F2 जनरेशन। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इतना हमको लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा इससे कि किस तरह से मेंडल ने सीड लिया। जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में तब भी बताए थे, यहाँ तुमको पूरा दिख रहा है अच्छे से। उसको मिट्टी में डाले, प्लांट निकला राउंड सीड का, और इधर ये का इमैस्कुलेशन किया गया, बैगिंग टेक्निक। क्यों बैगिंग टेक्निक करते हैं? बिकॉज फ्रॉम एनीवेयर, है ना, फ्रॉम एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन वो फर्टिलाइजेशन दूसरे प्लांट से नहीं हो जाए। दैट इज व्हाई इट इज बैक्ड फॉर सम टाइम। पॉलीथीन से उसको बांध दिया जाता है। नेक्स्ट, genes. At that time Mendel was not knowing about gene, because that time in biology we are not knowing about the nucleus, chromosome, etc. But now we are knowing genes. Genes are what? The hereditary information that determines a single trait. Hereditary information which comes from our parent to offspring. Parent से कहाँ से पर आता है? Offspring के पास आता है, and it is responsible for a single trait or single characteristic features. Alleles, alternate form of a gene, means in the population for a single trait how many genes are present. मीन्स अगर वाइल्ड वेराइटी है तो उसमें कितना जीन्स है, किसके लिए? वो सिंगल ट्रेट के लिए। दैट इज नोन एज एलील। आई टोल्ड यू दैट फॉर एग्जाम्पल, एलील की जब एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिस टी फॉर अ सिंगल ट्रेट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पी प्लांट में, ये एक एलील हो गया। फिर उसी सिंगल ट्रेट हाइट के लिए ये एक अलग एलील हो गया। तो एलील ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन फॉर मींस उसी ट्रेट के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स हैं प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज एलील। नेक्स्ट,
When an organism inherited two identical alleles for a trait, organism is said to be homozygous. Homo means same. So अगर किसी organism के पास suppose ऐसा trait है या इस तरह का trait है, it is known as homozygous. When an organism inherits two identical genes, you can see two identical genes are there, they are known as homozygous. And when an organism inherits two different alleles for one trait, the organism is called heterozygous. For example, this one. Both are different, and that is why the organism having this genetic makeup, अगर ये genetic makeup है किसी organism का, तो वो क्या है? Heterozygous. Different. यहाँ same. Coming to next slide. Why were all the seeds in the F1 generation round? Dominant versus recessive allele. Dominant an allele that is expressed whenever it is present. Dominant allele हम उस allele को बोलते हैं अगर वो present है, चाहे तो वो homozygous condition में या heterozygous condition में. होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, वो उसका ट्रेट दिखेगा डोमिनेंट का. रिसेसिव एन एलील दैट इज मास्क्ड व्हेनेवर द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट. रिसेसिव एलील वो है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सप्रेस्ड है, नहीं दिख रहा है, जब कौन रहेगा साथ में? डोमिनेंट. डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील influence an organism phenotype. Phenotype means physical appearance. These are responsible for physical appearance of any organism, whether it is plant or animal. Next, genotype. Genetic makeup of an organism. It is determined by the alleles present for each trait. एक ट्रेट के लिए कौन कौन सा एलील प्रेजेंट है. फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस मींस बाहर से देखने में, ऑफ अ ट्रेट इट इज एक्सप्रेस्ड ऑफ द जीनोटाइप. तो ये जीनोटाइप एक्सप्रेशन किस, फिनोटाइप में एक्सप्रेशन किसका है? जीनोटाइप का एक्सप्रेशन है. और जीनोटाइप अकॉर्डिंग टू जीन, अकॉर्डिंग टू एलील. फिनोटाइप बाहरी अपीयरेंस, बाहर से देखने में. नेक्स्ट, मेंडल के लॉ के बाद हम लोग देख रहे थे टेस्ट क्रॉस, जो हमें पढ़ना है. टेस्ट क्रॉस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 12. In offline classes also I told you that test cross is important, and here you have to remember that in test cross the unknown genotype, the unknown dominant genotype can be known by cross breeding with double recessive. ये याद रखेंगे कि डबल रिसेसिव से या होमोजाइगस रिसेसिव से, या हियर यू कैन सी टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप. वो प्लांट जिसका जीनोटाइप पता नहीं है उसको क्या करते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव से. यही बात को ध्यान रखना है.
होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं फॉर द ट्रेड। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, राउंड, राउंड सीट को ही ले लेते हैं। राउंड वेदर इट इज ऐसा राउंड है या फिर ऐसा राउंड है, होमोजाइगस डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये दो तरह का है जिसका कि जीनोटाइप हम लोगों को पता नहीं है, बस ये जान रहे हैं कि इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अभी बताया जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट इट इज क्रॉस्ड विद, क्रॉस ब्रीडिंग किससे हो रहा है, डबल रिसेसिव से। तो क्रॉस ब्रीडिंग किससे कराए, डबल रिसेसिव और होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये हो गया पेरेंट, डिनोट किए पेरेंट। अब गैमेट में एकदम सिंपल, आर आर, ये हो गया गैमेट। when 100% plant is dominant, 100% अगर ग्राउंड सीडेड प्लांट हुए तो वो क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, यही याद रखना है। और जब टेस्ट क्रॉस पूछ रहा है तो दोनों कंडीशन बताना है। समटाइम्स जनरली व्हाट स्टूडेंट्स do mistake after doing this one homozygous, they do not write about heterozygous dominant, नंबर कट जाएगा। अगर 2 नंबर का होगा तो you will get 1 mark because it is incomplete answer. So here when the heterozygous dominant is there, again करना क्या है, डबल रिसेसिव से या होमोजाइगस रिसेसिव से। ये एक कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन। when 100% plant dominant produce हुए in F1 generation, it is homozygous dominant। और यहाँ the gamete may contain this R or this R, दो possibility है, and here it is one possibility. This is for parent and this one is for gamete. Now see, R R, small r, and here R R, small r and small r. 50% plant is dominant and 50% plant is recessive, then the plant is heterozygous dominant. इतना बताना है तुमको टेस्ट क्रॉस में, और टेस्ट क्रॉस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, ठीक है। सो इन टेस्ट क्रॉस we determine a known genotype of any organism, dominant organism है ना, जो dominant trait है, क्योंकि dominant दिखता है, शो होता है फिनोटाइप में। डबल रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, ये केस 1 हो जाएगा और ये केस 2 हो जाएगा। हमेशा एग्जाम में केस 1 और केस 2 ये दोनों तुमको डील करना है। ये नहीं कि एक कर दिए होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट करके छोड़ दिए, नो, यू विल गेट लेस मार्क एट दैट टाइम। नेक्स्ट, Mendel's law. Based on Mendel's data, he formulated 2 laws: law of segregation, law of dominance भी है, law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Law of independent assortment, it is used for dihybrid process.
डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग लेते हैं जनरली. हियर इट इज वाइल्ड टाइप एंड इबोनी टाइप. It is done in Drosophila, but it is simple in doing pea plant. Mendels did this experiment for pea plant, dihybrid cross. So generally for this, for deriving dihybrid cross, we can take example of yellow and round seed and green and wrinkled seed. ये लेके हम लोग किए हैं in class also. Here a question arises, do Mendel's law always apply? मेंडल का लॉ क्या हमेशा, जो हम लोग पढ़ा, हम लोगों ने देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. These three laws always apply or not? Incomplete dominance. मेंडल का लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था. Incomplete dominance, a condition where all three genotypes